Hello everyone, a very good evening to all of you. Now friends, I'm Gaurav Gupta and I welcome all of you to your favorite YouTube channel, which is MBA Wallah for the preparation of CAT 2025 and the other examinations which will fall somewhere around CAT 2025. A very good evening to all of you. So, as usual, quickly confirm. So people are there, Barish, Dhruv and other students who are already there, Shritam and Himanshu. All of you, please quickly confirm if I'm clearly visible and audible so that we can quickly start solving the question that we'll quickly start over with the agenda that we have decided for this class. So friends, this is MBA Power Booster 2025 wherein we are just pushing your preparation to another higher level. Now, in the previous series on the YouTube, we have covered foundation for CAT 2025. We have covered different type of questions. We have covered each and everything related to the concept building, right? Now, in this series, MBA Power Booster, नाम clear है, ठीक है? So agenda भी clear कर देता हूँ. So whatever the agenda is, it must get cleared with the name of the series. Power Booster will include all the questions which are, I would say, like if I talk about previous years papers, 5 साल के पेपर उठा लेते हैं, 10 साल के पेपर उठा लेते हैं. तो for LRDI, I will be covering up all those questions जिनकी probability ज़्यादा है, जो काफी ज़्यादा बार यूज हुए हैं, like some of the most asked questions in CAT, right? So basically this is again decided by you people only. So we conducted a poll for all the students who watch our YouTube sessions and who have enrolled with us on the application. So the students only decided that they want this particular thing to be covered. The most repeated concepts, as you can see, the most repeated concepts for LRDI. Now friends, in today's session, I'm going to take on one of the concepts, one of the type of questions that has been repeated, I would say every second year, almost every second year on an average, right? Okay, so this topic belongs to logical reasoning, the topic that we are going to take on today. So it belongs to logical reasoning. It does not belong to data interpretation. Now, if I talk about commonly or a repeated concept, the most repeated concepts, I can say that games and tournaments will be at the top. So definitely we'll be covering games and tournaments, but not today. The second most important topic that we can see is Venn diagrams from logical reasoning. Yes, but we will not be covering it today. Right? Now, the third most important area that I have been seeing almost every year. Sir, हिंदी में बोलिए, समझ नहीं आ रहा है. अभिषेक, my friend, देखो यार, तुम कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो एंड अगर मेरी इंग्लिश, जो मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, अगर वो भी समझ में नहीं आ रही तो यार बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी कैट में. ठीक है दोस्त? सो लाइक टेक इट एज अ फ्रेंडली सजेशन, प्लीज इसका बुरा मत मानना. बट आई एम गोइंग टू सजेस्ट यू वन थिंग कि अपनी इंग्लिश थोड़ी सी इंप्रूव, थोड़ी नहीं काफी ज्यादा इंप्रूव करनी पड़ेगी इन केस यू आर गोइंग टू सिट फॉर एनबीए एंट्रेंस एग्जाम, राइट? सो टेक माय एडवाइस आज से ही, ठीक है? इट्स ऑलवेज अ स्टार्ट, लाइक हम हमेशा कोई ना कोई चीज स्टार्ट कर सकते हैं. सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, ठीक है, क्वांट इंप्रूव करने के लिए आप मेरे सेशंस अटेंड कर रहे हो, बट वर्बल एबिलिटी पे थोड़ा ज्यादा फोकस करो, बिकॉज आई एम यूजिंग वेरी बेसिक लैंग्वेज, वेरी बेसिक इंग्लिश, एंड कैट में तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट इंग्लिश आती है. सो इफ यू आर टारगेटिंग कैट, सो जल्दी से अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना शुरू कर दो. ऑलराइट सर, आप लोग टायर्ड नहीं होते क्या? आयुषी सो आयुषी, सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस इज आवर स्टूडेंट्स, right? हमारे students and their results. So just to make sure that you people get wonderful results and वो जो होता है ना, ये जो टाइम पीरियड होता है आप लोगों के लिए कैट से 4 महीने पहले, 6 महीने पहले, 7 महीने पहले, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज यही जो टाइम पीरियड होता है ना, ये आपका 1 साल इसको बना सकता है या बिगाड़ सकता है. So just taking all these things into considerations, we keep coming again and again, and yes, we never get tired. All right, नहीं हम थकते हैं, बट
on priority is our students. Okay, तो चलो सबने कंफर्म कर दिया था that I am clearly visible and audible. Okay, अगर कुछ प्रॉब्लम होती तो अभी तक आप चैट बॉक्स में बता चुके होते. All right, चलिए. So let's get into this. So the topic that I was talking about, the question that I'm going to take on today is of roots and networks. Roots and networks is one kind of thing that has been asked invariably almost every alternate year, right? कभी कभी तो consecutive years में भी आया है. तो this is, I can say that, one of the important areas. And there have been instances जहाँ पे CAT के एग्जाम में सेम एग्जाम में दो सेट आए हैं, दो क्वेश्चंस आए हैं रूट्स एंड नेटवर्क्स के. Okay, so today we are going to consider root and network, and we'll be solving one of the questions that has already appeared in CAT examination previously, and we'll be giving our 100%. हम अपने 100% efforts डालेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. So my suggestion, my request to all of you is, क्वेश्चन को देखने के बाद गूगल पे सर्च मत करना, सॉल्व करने की कोशिश करना, तभी लाइफ में मजा आएगा, तभी इस सेशन में मजा आएगा. सेशन बहुत ज्यादा लंबा नहीं होने वाला, एक सेट सॉल्व करेंगे रूट्स एंड नेटवर्क्स का, अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरीके से हैंडल करने चाहिए इस टाइप के क्वेश्चंस. ओके, एंड दैट्स इट, विल बी डन फॉर द डे. ओके, सो लेट्स बिगिन दिस क्वेश्चन ऑफ रूट्स एंड नेटवर्क्स. So the entire piece of directions are given only on a single page. That's it. This is the set of directions for all of you. Have a look at this, analyze this, and then we'll do a small analysis. हम इसका एक network chart बनाएंगे, network diagram बनाएंगे. Okay, and then I'll not solve anything. सिर्फ network diagram बनाऊंगा, and then I will take you to the questions. And I will let you people try this question by yourself. Okay, so all of you, काफी लोगों ने ये क्वेश्चन देखा भी होगा. फाइन, इसमें कोई I would say there are higher chances कि काफी स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन देखा होगा, but definitely we are going to solve it ourselves and will understand the basic behind this type of questions कि किस तरीके से ट्रीट करने होते हैं in general roots and networks के questions. So all of you, focus on whatever is there on your screen, jaldi se. And once you have understood this, please post done in the chat box after drawing the network diagram. Network diagram जैसे ही बन जाए तो फटाफट से done लिख दो chat box में. And if you all are actually serious for CAT 2025, CAT 2025 निकालना है, तो give your 100% attention to this question. Okay, or whatever question we are covering in the classes, give your 100% attention to all those questions. Then only you will be able to understand things and then replicate the same things in CAT 2025. All right, people, just tell me yes or no. Share your opinion with me. Are you able to draw the network diagram? Network diagram बहुत simple है. So are you able to draw the network diagram? Yes या no लिख दो जल्दी से. All right, nice. I'm Felix. Good yaar. You are one of the regular students I see in the classes. Very good. Dhruv, no. अरे ध्रुव, नेटवर्क डायग्राम यार, ए से बी पे जाना है, इंटरमीडिएट कौन कौन से सिटीज हैं या फिर व्हाटएवर जो भी है यहाँ पे, हाँ टाउन है, सिटी है, जो भी बीच में इंटरमीडिएट थिंग्स हैं. ओके, सो नेटवर्क डायग्राम तो बहुत सिंपल है ना. यहाँ पे तो 4 ही नोड्स हैं, अकाला, बकाला, ननुर एंड ममुर. ओके, सो ओनली 4 नोड्स आर देयर. यस 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 यस, यू हैव ऑल द टाइम. आराम से नेटवर्क डायग्राम बनाओ. Okay, so a lot of people are saying no.
So let me take you to the analysis page where all the directions, the same set of directions are given at the bottom of the screen. नीचे दिया हुआ है. So those who want to continue by themselves, they can do that. And I'm starting with the analysis. ठीक है, इसका एक बार नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं, समझते हैं कि क्या हो रहा है. So question says 4 cars needs to travel. There are 4 cars, important number, 4 cars need to travel from Akala to Bakala. So A and B. So I'll write A and I'll write B. 4 cars needs to travel from A to B. Not directly. 2 routes are available, one via Mamur and one via Nanur. So one via M and one via N. So these are the routes available. So A to M and M to B. These are 2 roads. A से M पे जा सकता हूँ, M से B पे जा सकता हूँ. And the second route is via Nanur. So A to N and N to B. So these are the routes. So I'm sure that each and every one of you is able to draw at least this network diagram. ठीक है, अब हो क्या रहा है यहाँ पे? The roads from A to M and from N to B are both short and narrow. तो ये छोटी roads हैं, narrow roads हैं. In each case, इन दोनों routes पे, तो कौन सी roads की बात कर रहा है? A to M and N to B. So he's talking about this road and this road. अब इस road पे कितना time लगता है? In each case, one car takes 6 minutes to cover the distance. अगर एक अकेली कार चल रही है तो it will take 6 minutes to cover the entire distance. मैं यहाँ पे 6 लिख देता हूँ. 6 for this and 6 minutes for this. Right? And each additional car increases the travel time per car by 3 minutes. Okay, so let's understand this statement, what is going to happen here, right? So all of you will have to answer now. So I'm considering the road A to M. ये वाली road consider कर रहा हूँ. If one car will travel on this road, how much time it will take? Then if 2 cars will travel on this road, how much time both the cars will take? If 3 cars will travel, how much time they will take to travel on this road? So question says that if one car travels, it will take 6 minutes. Fine, no problem. So यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 6 minutes. Meanwhile, all of you can write your answers. Good, very good. So if one car will travel, it will take 6 minutes. Now, next it says each additional car increases the travel time. Each additional car increases the travel time per car by 3 minutes. तो अगर एक कार और ऐड हो जाती है, एक कार और ऐड हो जाएगा तो 3 minutes ऐड हो जाएंगे. So now both these cars will take 6 plus 3, that is 9 minutes. If another car is added, so ये जो 9 है इसमें 3 और ऐड हो जाएगा, it will take 12 minutes. If another car is added, if 4 cars are traveling on this road, then it will take 12 plus 3, that is 15 minutes. So each of the cars will take 15 minutes. So if single car is traveling 6 minutes, each additional car will increase the travel time by 3 minutes per car. So हर एक कार अब 6 minutes में travel, 6 plus 3 9 minutes में travel करेगी. अगर 3 cars है तो 12 minutes में travel करेगी हर एक कार. Okay, and so on, it will be like this. Okay, so he has given this information about these 2 roads. So ये दोनों roads एक जैसी हैं. One car will take 6 minutes and every additional car will increase the travel time per car by 3 minutes. Over, right? Okay, now let's talk about the other roads. इसको increase कर देते हैं and I will talk about the other roads. Perfect. So यहाँ पे एक example से भी समझाया हुआ है. For example यहाँ पे if only 2 cars drive A to M, each car takes 9 minutes. ठीक है, तो समझाया हुआ है एक छोटा सा example देके. Now they are talking about the other 2 roads. The road from A to N, this one, 20 minutes and additional it will take 1 minute. So 20 and every additional car will increase the travel time by 1 minute. And the last road M to B, Mamur to B, इसमें क्या है? One car takes 20 minutes and additional 0.9 minutes. That's it. ठीक है? So one car takes 20 minutes and additionally 0.9 minutes.
All right. So this is something about the travel time that a car will take, a car or more number of cars will take to travel across each and every road. Done? ठीक है. अब कुछ गाइडलाइंस हैं पुलिस डिपार्टमेंट की. अब पुलिस डिपार्टमेंट ने ऑर्डर किया है. अब ये जो लास्ट लाइन है ना, ये बहुत ही ट्रिकी लाइन है और इसको समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा. ठीक है, तो टाइम लगाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. द पुलिस डिपार्टमेंट ऑर्डर्स ईच कार टू टेक अ पर्टिकुलर रूट इन सच अ मैनर. पुलिस डिपार्टमेंट ने ऑर्डर किया कि भाई हर एक को एक पर्टिकुलर रूट लेना है. 4 कार्स हैं हमारे पास. ओके, सो दे हैव डिवाइडेड दीज 4 कार्स on these 2 routes in such a manner that it is not possible for any car to reduce its travel time by not following the order while the other cars are following the order. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? सिंपल सा, पुलिस डिपार्टमेंट ने बोला है कि भैया कुछ कार्स एक रूट से जाएंगी और कुछ कार्स दूसरे रूट से जाएंगी. सो बेसिकली पुलिस डिपार्टमेंट ने ऑप्टिमाइज किया है द टाइम ऑफ ट्रैवल को ऑप्टिमाइज किया है. ऑप्टिमाइज मींस मिनिमम किया है. सो अगर पुलिस डिपार्टमेंट ने जो ऑर्डर किया है कोई भी कार उसको फॉलो नहीं करती, देन इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी कार टू रिड्यूस इट्स ट्रैवल टाइम. सो अगर कोई कार बोलती है नहीं मैं पुलिस का ऑर्डर नहीं फॉलो करूंगी और मैं दूसरे रूट से जाऊंगी क्योंकि दूसरा रूट कम टाइम ले रहा है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज दूसरा रूट कम टाइम नहीं लेगा. सो पुलिस डिपार्टमेंट ने जो भी रूट प्लानिंग की है उसमें टाइम ऑप्टिमाइजेशन का पुलिस डिपार्टमेंट ने ध्यान रखा है. दैट मींस व्हाटएवर डिवीजन, whichever way पुलिस डिपार्टमेंट हैज डिवाइडेड दीज 4 कार्स इन दीज 2 रूट्स, वो मिनिमम टाइम ऑफ ट्रैवल है. ठीक है, राइट? तो ये चीज समझ में आती है या फिर नहीं? तो अब हमें क्या करना है, हमें 4 कार्स को इन दोनों रूट्स पे इस तरीके से डिवाइड करना है सच दैट द टाइम ऑफ ट्रैवल शुड बी मिनिमम. दैट्स इट, ये चीज करनी है. ओके, राइट? सो अंडरस्टूड. सो नाउ टेल मी, I'll show you the first question. How many cars would be asked to take the route A and B, that is Akala Nanur Bakala route by the police department? So कितनी कार्स को पुलिस डिपार्टमेंट में इस वाले रूट से जाने के लिए बोला है, ये हमें कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में. राइट? सो द फर्स्ट 2 क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन ऑप्टिमाइजिंग द टाइम ट्रैवल ऑन दिस रूट. राइट? सो लेट्स ऑप्टिमाइज द टाइम ऑफ ट्रैवल. अब हमारे पास डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. वी हैव 2 रूट्स, द फर्स्ट वन एट द टॉप, द सेकेंड वन एट द बॉटम. AMB. This is the first route. Wait. This is the first route and this is the second route. Right? AMB and ANB. Okay? Now there can be different possibilities. It might be possible that there can be all four cars will travel from here and 0 cars traveling from here. Or 3, 1, this is another possibility. 2, 2, 1, 3 and 0, 4. I have written all the 5 possibilities, right? Now for each of these possibilities, I'll calculate the time of travel. So I'll help you with the first case and then I'll ask you for the second case and the next cases. तो पहले केस में अगर चारों कार्स इधर से ट्रैवल करेंगी, all 4 cars will take the first route and none of the car will take second route. How much time will be taken? Okay, how much time will be taken? So let's have a look at it. Instrumental Guru, you are asking something, so I'll come to your question. दोस्त, ठीक है, पहले क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, सेट कंप्लीट करते हैं and then we'll talk about that. So first route से अगर 4 कार्स जाती हैं, so A to M कितना टाइम लगेगा? 6 plus 3 plus 3 plus 3, that is 15 minutes. So 15 minutes A to M लगेंगे. 15 minutes. Wait, I'll change the color of the pen while I'm writing the time taken. So 15 minutes will be taken in this route A to M and then M to B कितना टाइम लगेगा?
20 minutes is the base time, and then there are 3 additional cars. Since there are 4 cars which are traveling, so one car के लिए 20 लगेगा. Every additional car will increase the travel time by 0.9 minutes. So 0.9 into 3 is 2.7. So 20 plus 2.7, 22.7. So total time इनको add कर दो, 37.7 minutes. इतना time लगेगा. Am I clear on this? Yes or no? Good. I am Felix. 15 plus 22.7 minutes. Right? ठीक है? अब second वाला case consider करते हैं. 3 cars from the first route and 1 car from the second route. Can you tell me the total time in the first route and the second route if 3 cars will travel from the first and 1 car will travel from the second? Go ahead. एंड अगर इस क्लास में हो एंड क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे हो, आंसर नहीं लिख रहे हो चैट बॉक्स में, तो कोई यूज नहीं है इस क्लास में बैठने का. ठीक है, लर्निंग नहीं होगी. लर्निंग तभी होगी जब कैलकुलेशन कर रहे हो. तो जो मैंने कैलकुलेशन किया अगर वो समझ में आती है, गिव मी द नंबर्स, गिव मी द टाइम टेकन फॉर द सेकंड केस when 3 cars will travel from the first route. So if 3 cars will travel from the first route, it will take 6 plus 3 plus 3, 12 minutes, plus 20 plus 0.9 plus 0.9, that is 21.8. So the time taken will be 33.8 minutes. All right, and only 1 car will travel from the second route, so it will take 20 plus 6, 26 minutes. Okay, right? Now if I look at the first case and the second case, first case and the second case, 4 cars are traveling from this route and no car is traveling from this route, right? ठीक है, अब क्या होगा अगर ये जो 4 कार्स है इनमें से one car start traveling in this on this route, यहां पे ट्रैवल करना शुरू कर देती है. 3 कार्स यहां पे रह जाएंगी, 1 कार यहां पे रह जाएगी, राइट? तो उसका ट्रैवल टाइम कितना हो जाएगा? 37.7 से 26 हो जाएगा. ओके, ये चीज आप फोकस करो. ये जो पुलिस डिपार्टमेंट ने कुछ कुछ बोल दिया है, राइट, इसका मतलब समझते हैं. सो द पुलिस डिपार्टमेंट ऑर्डर्स ईच कार टू टेक अ पर्टिकुलर रूट सच दैट in such a manner that it is not possible for a car to reduce its travel time by not following the police order. So 4 में से 1 कार अगर पुलिस का ऑर्डर फॉलो नहीं करती तो वो कितना टाइम लेगी? 26 मिनट्स, राइट? तो ये पॉसिबल है. टाइम रिड्यूस हो रहा है इस कार का, यस हो रहा है. सो क्या करेंगी? 4 कार्स जो है ये वाला फॉलो ना करके सेकंड केस फॉलो करेंगी, because it is possible to reduce the travel time by not following the police order. ठीक है, अगर एक कार पुलिस का ऑर्डर फॉलो नहीं करती तो क्या ये अपना टाइम रिड्यूस कर पा रही है? यस, कर पा रही है. तो वो करेगी, पुलिस का ऑर्डर फॉलो नहीं करेगी. ठीक है, राइट? सो बाय नॉट फॉलोइंग द पुलिस ऑर्डर, इज इट एबल टू रिड्यूस द टाइम? यस, इट इज एबल टू रिड्यूस द टाइम. अगर टाइम रिड्यूस करना पॉसिबल नहीं होगा, देन it will take that particular route. All right, देखते हैं अब. Now फर्स्ट वाला जो केस था ये कैंसिल हो गया बिकॉज पुलिस के ऑर्डर फॉलो ना करने से टाइम रिडक्शन पॉसिबल था. तो इसीलिए अब ये वाला केस हम कंसिडर करेंगे 3 कार्स फ्रॉम फर्स्ट रूट एंड 1 कार फ्रॉम सेकेंड रूट. नाउ इसके बाद ये वाला रूट चेक करते हैं, ये वाला केस चेक करते हैं, 2 कार्स एंड 2 कार्स. So 2 cars from the first route and 2 cars from the second route, total time of travel find out करते हैं. So 6 plus 3, 9 minutes plus 20.9 minutes, that is 29.9 minutes if 2 cars will travel from the first route. And if 2 cars will travel from the second route, the time taken will be 20 plus 1, 21 plus 9, that is 30 minutes. Okay, now look at the second case and the third case, these 2 cases. So 3 cars originally were traveling along this route. If 1 car decides to change and go on this route,
विल इट बी एबल टू रिड्यूस द टाइम ऑफ ट्रैवल, यस और नो? तीन में से एक कार बोलती है कि मैं ये वाला रूट फॉलो ना करके मैं ये वाला रूट फॉलो करूंगी, तो इंस्टेड ऑफ 33.8 मिनट्स उसको कितना टाइम लगेगा? 30 मिनट्स लगेंगे, राइट? ठीक है, 30 मिनट्स लगेंगे। तो इट इज एबल टू रिड्यूस द ट्रैवल टाइम। तो ये क्या करेगी? ये पुलिस का ऑर्डर फॉलो नहीं करेगी एंड वो ये वाला रूट फॉलो करेगी। तो सेकेंड रूट भी कैंसिल हो गया, सेकेंड केस भी कैंसिल हो गया एंड थर्ड केस कंसिडर करेंगे अब हम, राइट? ठीक है, सो अपना ट्रैवल टाइम रिड्यूस कर पाएगी तो ये करेगी, डेफिनेटली करेगी। आगे चलते हैं, अब ये वाला केस कंसिडर करते हैं। सो 2 2 1 3, अगर 1 है तो 6 + 20 दैट इज 26, ऑलराइट? एंड यहां पे 3 कार्स, 22 + 12 दैट इज 34. Okay, now consider these two cases. 2 cars originally were traveling here. Now one car if decides not to follow this route but to take this route, तो इसको टाइम कितना लगेगा? 29.9 पहले लग रहा था, अब कितना लगेगा? 34. Has it reduced the time of travel? क्या इसका ट्रैवल टाइम रिड्यूस हो गया? नहीं हुआ. So that means this route is the most optimal route and वो पुलिस का ऑर्डर, अगर पुलिस ने ये वाला रूट फॉलो करने का ऑर्डर दिया है तो इस वाले रूट को चेंज करने से, अगर एक कार इस वाले रूट की जगह इस वाले रूट पे आ जाती है, then it will not be able to reduce the time of travel and hence this 2-2 was the most optimal solution. All right, ठीक है? So we can say that 2 cars will travel from the first route and 2 cars will travel from the second route. This is the most optimal solution for this question. Okay, बस यही करना था हमें. First 2 questions solve हो चुके हैं. Okay, so if 2 cars will travel from the first route, they will take 29.9 minutes. And 2 cars will travel from the second route, they will take 30 minutes. Okay, fine. So what will be the answer of question number 1? Have a look at it and tell me. Okay, so instrumental guru, you are asking snap के लिए कौन सा बैच ज्वाइन करना चाहिए? So आप क्या कर सकते हो, अभी एक elite बैच है वीकडेज का, आप वो बैच ज्वाइन कर सकते हो, वीकेंड बैच भी ज्वाइन कर सकते हो. एंड आई मस्ट टेल यू दैट whatever batches are there, in those batches omits other management entrance examinations like snap, narsi munji, इन सब की भी क्लासेस होंगी. ठीक है? So the students who are attending our batches, जो पाइनियर बैच में है, कोर बैच में है, प्रो बैच में है, आप सबके लिए ओमेट्स की क्लासेस soon they are going to start. ठीक है? So हर एक बैच में होगा ये, so you don't have to worry. So let's have a look at this. How many cars would be asked to take route A and B? So 2 cars would be asked to take this route A and B, and A and B, 2 cars will travel from these 2 routes. Okay, fine. चलिए, fine. Next question. If all the cars follow the police order, that means 2 cars, what is the difference in travel time in minutes between a car which takes route A and B and a car which take route AMB? So travel time में difference कितने का है? What is the difference between the travel time? Perfect, perfect, perfect. जल्दी से बता दो यार. So if I'll go back, so 29.9 AMB and 30 minutes for the other. इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 0.1 minutes. Okay, so answer will be 0.1 minutes, which is option B. So first 2 question बहुत easily solve हो गए हैं. अब next 2 questions के लिए थोड़ा सा कुछ additional करना पड़ेगा. There will be some additional information that will be given to us. Okay, right? So additional information में करेंगे क्या? ज्यादा से ज्यादा एक रोड और बना देंगे. ठीक है?
So let's have a look at that. So question number 3. So there is some extra thing that is given to you. A new one-way road is built from M to N. So quickly read it out and then I'll take you back to the directions. Now next, third and fourth question are based on this extra road that has been created from M to N. आयुष दोस्त, इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा, ठीक है। अब मैं दोबारा पूरा का पूरा रिपीट नहीं कर सकता, प्लीज कंस्ट्रेंट को अंडरस्टैंड करो, ठीक है। अभी 5 मिनट बाद ये सेशन खत्म हो जाएगा, देन आपने जो फर्स्ट पोर्शन मिस किया है, स्टार्टिंग का पोर्शन मिस किया है, आप उसको दोबारा से देख सकते हो। So question says that a new one-way road is built from M to N. Each car now has 3 possible routes to travel. AMB, ANB, the original 2 routes, and the third route AMNB. On this new road that they have created, one car takes 7 minutes and each additional car increases the travel time per car by 1 minute. तो similar way में explain किया हुआ है इस road पे travel time. Now assume that any car taking AMNB route, so AMNB, तो उसको A से M पे जाना है, तो फर्स्ट वाले रूट का कुछ पोर्शन फॉलो कर रही है, एंड N टू B जाने के लिए सेकंड वाला जो रूट है उसका कुछ पोर्शन फॉलो कर रही है। ओके, सो अज्यूम दैट एनी कार टेकिंग दिस रूट, assume that any car taking this route travels AM portion at the same time as the other cars are taking, ठीक है। सो नॉर्मल तरीके से ही चलेगा, जितनी कार्स AM वाले पोर्शन पे ट्रैवल कर रही हैं उस हिसाब से हम टाइम कैलकुलेट करेंगे, एंड जितनी कार्स NB से ट्रैवल कर रही हैं हम उस वाले नंबर ऑफ कार्स के हिसाब से ट्रैवल टाइम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, फाइन। Now question is, how many cars would the police department order to take this route, this new route, so that it is not possible for any car to reduce its travel time by not following the order while the other cars are following the order. तो once again हमें क्या करना है, ऑप्टिमाइज करना है ट्रैवल टाइम को, मिनिमाइज करना है। ओके, assume that police department would never order all the cars to take the same route and at least one car travels through this route. तो ये जो नया रूट है इससे एटलीस्ट एक कार ट्रैवल करनी चाहिए, राइट? चलो तो दोबारा से ड्रॉ करते हैं यहां पे, एंड लेट्स लुक एट द सॉल्यूशन फॉर दिस इन द एग्जैक्ट सेम मैनर। वही केसेस बनाएंगे। सो A and B, M and this is N, and one road is from M to N, right? Now what were the travel times? 6 bracket 3, 6 bracket 3, okay, 20 bracket 1 and 20 bracket 0.9. ये थे travel times, and this new road I have 7 plus 1, okay, 7 minutes, and every additional car will take 1 minute. तो ये डायग्राम तो अब समझ में आता है, फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी, फर्स्ट 2 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। ओके, नाउ आई हैव टू डिवाइड दीज 4 कार्स वंस अगेन सो दैट द ट्रैवल टाइम विल बी ऑप्टिमल। सो बट यहां पे अब हमारे पास कितने रूट्स हैं? 3 रूट्स हैं। ओके, सो वी हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल अलोंग दिस। ओके, सो फर्स्ट रूट इज AMB, सेकेंड रूट इज AMNB, and the third route is ANB. Okay, I'll write these 3 routes. Now क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एटलीस्ट 1 कार should travel through this, तो मैं बोलता हूं एक कार यहां से ट्रैवल करेगी, 2 कार यहां से, 1 कार यहां से, so 1 car will travel from here. Now 2 cars from here, 1 car from here, एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, या फिर 1 car from here, 2 cars from here, अगर 1 कार यहां से ट्रैवल करती है, ठीक है। If 2 cars will travel from here, possibility can be 1-1.
नाउ आई विल नॉट पुट जीरो एनीवेयर, रीजन बीइंग जीरो से हम देख चुके हैं कि ऑप्टिमाइज नहीं हो पाएगा सॉल्यूशन, ठीक है, तो वो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। आपको जीरो वाला केस लेके चेक करना है तो आप कर सकते हो, बट ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि जीरो से ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं आ पाएगा हमारे पास, कि किसी भी रूट पे अगर मैं जीरो कार्स डाल देता हूं, ओके, राइट। सो नाउ लेट्स कैलकुलेट द ट्रैवल टाइम्स for each of these three cases. Done. So all of you now will have to focus a lot in this case. Now if two cars are traveling from this route, how much time they will take? Two cars from this route, one car from this route. So all of you from this road AM total कितनी cars travel करेंगी, जल्दी से बता दो। खुशप्रीत देख, अगर एक बार समझ में आ जाता है ना, मैं तो इतना समझा रहा हूं तब इतना टाइम लग रहा है। सो बिलीव मी, कैट 2017 का क्वेश्चन है शायद, एंड ये जब मैंने कैट दिया था तब ये मेरे एग्जाम में आया था। आई हैव रिटन दैट कैट, ओके, एंड बिलीव मी ये वाला जो क्वेश्चन है ना पूरा 12 से 14 मिनट्स में सॉल्व हो गया था। मेरे से ही नहीं, काफी सारे स्टूडेंट्स से 12 to 14 मिनट्स में सॉल्व हो गया था। ओके, सो प्लीज डू नॉट वरी एट ऑल, फाइन। Okay, so now tell me how many cars will travel from this road? इस वाली रोड A to M पे कितनी cars होंगी in total? There will be 3 cars, 2 ये वाली cars और 1 ये वाली car. So there will be 3 cars from this road. Okay? इस वाली रोड पे 3 cars होंगी, मैं यहाँ पे ब्लू कलर येलो कलर से लिख देता हूँ 3 cars. Okay? Then 2 cars from here, 1 car from this road, 2 cars from this road and 1 car from this road, ठीक, ओके। तो अब जल्दी से टाइमिंग्स लिखते हैं। AMB 3 cars and 2 cars, so 3 cars will take 12 minutes and 2 cars will take 20.9 minutes, so total time कितना हो गया 32.9, okay, keep focusing here. Then from the second route, ये वाला रूट है, so time taken will be 12 plus 7 plus 9, okay, so 28 minutes. And finally सबसे नीचे वाला रूट, so 1 car from here and 2 cars from here, तो अगर इस वाले रूट पे जा रहे हैं तो 20 plus 9, 20 plus 9, that is 29 minutes total time taken, okay, so 32.9, 28 and 29, right, ठीक है। अब ये वाले रूट को छोड़ के अगर मैं इस वाले रूट पे आता हूं, दैट मींस कार ने किया क्या है, ये वाली जो कार थी ये इधर शिफ्ट हो गई, तो देखते हैं कि क्या ये अपना ट्रैवल टाइम रिड्यूस कर पाई या फिर नहीं। सो नाउ आई एम मेकिंग द सेकेंड केस। तो सेकेंड केस के लिए अगेन मैं नंबर ऑफ कार्स लिखूंगा, ऑलराइट। सो AM यहां से 2 कार्स जा रही हैं, 2 कार्स आर गोइंग टू ट्रेवल फ्रॉम हेयर AM से, राइट। फ्रॉम AN 2 कार्स आर ट्रेवलिंग, यहां से 1 कार इज ट्रेवलिंग, फ्रॉम हेयर 3 cars are traveling, okay, and from here only 1 car is traveling, right? So you'll have to look at each and every road. So जो first route है, this route time taken कितना होगा जल्दी से बता दो। Good. So lot of you are following this, nice. So जल्दी से आंसर लिख दो। ये वाले रूट पे कितना टाइम लगेगा, 6 plus 3 9 minutes plus only 1 car is traveling 20 minutes, so 29 minutes from here, okay. Now second route, this and this, so 9 plus 7 plus 6 plus 3 plus 3 12, so that is 28 minutes, which is the same, कोई चेंज नहीं आया। बट सबसे नीचे वाले रूट के लिए 2 cars 21 minutes plus
12 minutes, 33 minutes. Okay. Now tell me, इस वाले केस को छोड़ के क्या ये वाला केस फॉलो करेगा कोई? यस या फिर नो? यहां पे ये वाली जो कार है, एक कार इधर से इधर चली गई. ओके, सो वन कार हैज मूव फ्रॉम दिस रूट टू दिस रूट. इज इट एबल टू सेव टाइम? यस और नो? सो पहले इसको 32.9 मिनट्स लग रहे थे, अब 33 मिनट्स लग रहे हैं. सो अभी ज्यादा टाइम लग रहा है, सो इट विल नॉट गो टू दिस रूट. तो आई कैन से दैट ये वाला जो है टाइम, ये ऑप्टिमल नहीं है. दिस इज स्टिल द मोस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन, right? So first case will stick with the first case and the car will not go to the second case. All right, because यहाँ पे 32.9 is the time taken and यहाँ पे 33 is the time taken. So I can say that the cars will follow this, not this. Now let's look at the third case. Now third case एक बार draw करते हैं and then question will be over. Okay. Now using the third case, first of all I'll write the number of cars traveling to each of these roads. हर एक रोड से कितनी कार ट्रैवल कर रही है. So A M से 3 cars ट्रैवल कर रही है, यहां से 3 cars are traveling. Okay, from here 2 cars are traveling and N B से 3 cars are traveling. Okay, ठीक है. Then 1 car is traveling from here and 1 car is traveling from here. Simple. So let's now write the time. So can you all please take the lead and tell me the time in the first route, second route and the third route. Meanwhile, I'm also calculating. So 6 plus 3 plus 3, 12. 12 plus 20, 32 minutes. Okay. Then second route, 12 plus 8 plus 12. That is again 32 minutes. And the third route, 20 plus 12, again 32. All right. अब फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करते हैं, फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करते हैं. सेकंड तो कैंसिल हो गया ना. नाउ यहां पे क्या हुआ है, 2 cars वर ट्रैवलिंग फ्रॉम हियर, फ्रॉम दिस रूट. इनमें से एक कार निकल के इस वाले रूट पे आ गई. So earlier they were taking 32.9 minutes. Now they are taking 32 minutes. Are they able to reduce the time of travel? Yes or no? Are they able to reduce the time of travel? They are. This you can see is the most optimal solution that can be used. 32 minutes. यहाँ पे कितना था? 32.9 minutes. यहाँ पे कितना था? 33 minutes. So this is the most optimal solution. So 1 car will travel from the first route. 2 cars will travel from the second route and 1 car will travel from the third route. Okay, the routes that I have made. So 1 car from here, 2 cars from here, 1 car from here, 1 car from A M B, 2 cars from this and 1 car from this. All right, ठीक है, fine. So now I'll read the question. How many cars would the police department order to take this route so that it is whatever blah blah blah. So how many cars are traveling from this route? What will be your answer? So there are 2 cars which are traveling from this route. So the correct answer will be 2 in this case. Okay, fine. Let's get over with the last question. जल्दी से last question देखते हैं. Last question में फर्स्ट पैराग्राफ बिल्कुल वही है, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन थी वो वही है. इफ ऑल द कार्स फॉलो द पुलिस ऑर्डर, व्हाट इज द मिनिमम ट्रैवल टाइम फ्रॉम ए टू बी? सो जल्दी से बता दो व्हाट इज द मिनिमम ट्रैवल टाइम फ्रॉम ए टू बी एंड दीज आर योर ऑप्शंस. सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड दिस. सो टाइम ऑफ ट्रैवल कितना था? सो यहां पे फर्स्ट रूट में इट वाज टेकिंग 32.9 मिनट्स, सेकंड रूट में इट वाज 33 मिनट्स एंड द थर्ड रूट इट वाज 32. सो ऑप्टिमल सॉल्यूशन यही था. सो आंसर विल बी 32 मिनट्स. ओके, सो इट विल नॉट बी 26 Manas, it will not be 26 Jyotishman,
इट विल नॉट बी 26. 26 आपको यहाँ पे कहाँ दिख रहा है? कहीं 26 नहीं है, राइट? सो ऑब्वियसली 26 तो आंसर नहीं हो सकता. अब इन तीनों में से कौन सा सॉल्यूशन कंसिडर किया था? यहाँ पे टोटल टाइम कितना लग रहा है? इफ दीज 3 रूट्स विल बी फॉलोड इन पैरेलल, सो मिनिमम टाइम, कम से कम कितने टाइम में सारी की सारी कार्स क्रॉस करेंगी? 32.9 मिनट्स में. यहाँ पे 33 था, बट हेयर इट वाज 32 अक्रॉस. सो आंसर विल बी 32. दैट इज ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके. हाँ, इप्सिता फर्स्ट रूट क्यों नहीं लिया? बिकॉज फर्स्ट रूट में 32.9 मिनट्स लग रहे हैं. ठीक है, फाइन. अब ऑब्वियसली जो भी इनमें से हायर होगा वही टाइम लेंगे ना हमें. हम 2 कार्स को इतना टाइम लग रहा है, एक कार को 28 मिल रहा है, एक कार को 29 लग रहा है, राइट? तो मिनिमम पॉसिबल टाइम इन विच ऑल द कार्स विल क्रॉस, वो कितना होगा? इट विल बी 32.9 मिनट्स. सो दैट्स व्हाई मैंने इसको कंसिडर नहीं किया, बिकॉज यहां पे उससे कम टाइम लग रहा है. ऑलराइट, ऑलराइट इप्सिता. ओके, A2M पे 3 कार्स कैसे लिए? A2M पे 3 कार्स यहां पे कैसे लिए? अगर AM यहां से इस वाले रूट से एक कार जा रही है और इस वाले रूट पे 2 कार्स, लुक एट दिस. इस रूट पे एक कार है, इस रूट पे 2 कार्स हैं, तो यहाँ पे AM पे 1 है और AM पे यहाँ पे 2 है, तो AM वाला जो रोड है उस पे टोटल 3 कार्स हो गई. क्लियर? सो दैट्स व्हाई 3 कार्स आर ट्रैवलिंग फ्रॉम हियर. तो हर एक रोड को भी अलग अलग कंसिडर करना है, राइट? ठीक है यश? परफेक्ट, ग्रेट. सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट दिस सेट. डिफिकल्ट सेट था ऑब्वियसली, क्योंकि कैट का सेट था. कैट में ऑलरेडी आ चुका है. फाइन. सो वेट. ऑल राइट. सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, and I'll see you in the next week with yet another session in which I'll be discussing one of the most beautiful sets, one of the most repeated sets that we have seen in the previous year papers of CAT. All right, so that's all from my side. Have a good night. I'll see you again. Bye bye.